Today I'm going to start with the next chapter. We have already done Tiger King. Now I'm going to start the next chapter from the same book, that is Journey to the End of the Earth. First of all, I'll explain you what is the chapter about, and this chapter may be an important chapter from the perspective of boats. Reason, it deals with a very, you know, कॉमन थीम एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थीम जिस पर आजकल काफी डिबेट्स हैं. And you may be even asked for a CBT, that is a competency based question, where you may be asked to give your opinion, write an article, or have a conversation. Last year what happened is there was a school in which there was a very beautiful, you know, correlation, क्योंकि CBSE हमें यही बोलता है कि जैसे ये चैप्टर मैं करवा रही हूँ, जर्नी टू द एंड ऑफ द हर्थ, this chapter has a correlation to the past chapter, that is Tiger King. तो हो सकता है कि आपसे इन दोनों को क्लब अप करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर देयर इज वन चैप्टर इन योर फ्लेमिंगो इंटरव्यू, तो आपको जो है एज एन इंटरव्यूअर आपसे पूछा जाए कि यू आर इंटरव्यूइंग तिशानी दोशी, तो आपको क्या पता लगता है. एनीथिंग दैट comes in the CBT, that is competency based questions, you need to understand the theme of the chapter. अगर आपको थीम आता होगा तो उसे आर्टिकल, डिबेट, पैराग्राफ या फिर आपके डायलॉग राइटिंग आप किसी में भी लिख सकते हो. इट्स नथिंग अ बिग इश्यू, राइट? सो द चैप्टर इज ऑल अबाउट आवर एनवायरनमेंट, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट, relation with environment. What the author wants to say is कि if you want to actually see what is happening in the world, how the world is getting destructed, then you must go to Antarctica. मतलब आप, वो हमें नहीं कह रही है, वो बता रही है कि sitting at our couch, watching the television and debating on the topic of global warming is very easy. लेकिन अगर आपको सचमुच में लगता है कि you need to know what is the evolution of the earth, what is the present condition of the earth, and what will happen in the future, then one must see what happens in Antarctica. Now the next question comes is, why Antarctica? Why not anything else? The reason is Antarctica is the oldest landmass. Antarctica, South America, South Africa, India, and Australia, they all were the part of a large landmass called Gondwana, जो हमने 9th standard में अपने social science में पढ़ा था. And बाद में, because of the volcanic eruptions and the drifting of the volcanic rocks, आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या फिर सब कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो गए. लेकिन जो मेन पार्ट अंटार्कटिका है वो वहीं पर है जहां आपको जो है बिलियन ईयर ओल्ड आइस एज वेल एज द कार्बन कैन बी सीन ट्रैप्ड. तो आप वहां जब जाते हो तो विद द trapping of the carbon, you can analyze, evaluate the real year of earth. आप अर्थ के ओरिजिनल एज को बना सकते हो. एंड देन व्हेन यू सी देयर, आप वहां सामने खड़े होकर ग्लेशियर को टूटते हुए देखते हो. इट इज जस्ट लाइक अ माउंटेन कमिंग ऑन द अर्थ. आप वहां खड़े होकर अपने सामने इतने बड़े चट्टान को टूटते हुए देख सकते हो. And you can also analyze what is the future of earth agar aisa hi raha. So that is why there is one question which says Antarctica is the best place to study the past, present and future. अब ये जो चैप्टर है, ये एक ऑथर, जर्नलिस्ट, पोएट, डांसर, ये जो थी तिशानी दोशी, एन इंडियन,
she had the opportunity to travel in a program. उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस. ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है, दिस इज स्टार्टेड बाय अ कैनेडियन प्रोफेसर जॉफ ग्रीन, जो बच्चों को यानी कि द हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर टेकन. नाउ द क्वेश्चन इसमें पेपर में आता है, व्हाई ओनली द हाई स्कूल स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट सेलिब्रिटीज? तो उनका मानना है कि जो सेलिब्रिटीज हैं दे आर ओनली वर्किंग फॉर मनी. उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है. दे वुड ओनली परफॉर्म, दे वुड नॉट बी एसोसिएटेड. और जो बच्चे हैं वो फ्यूचर डिसीजन मेकर्स हैं. दे आर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड वो जो है दे कैन वेरी वेल कोरिलेट देमसेल्फ विद दिस. एंड हो सकता है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि आगे हमारा जो अर्थ है इट इज नॉट डिप्लीटेड. दिस, ये जो प्रोग्राम है, अराउंड 50 पीपल दे ट्रैवल इन अ ship called academic Shukalsky. Means it's a Russian name, and academic means studying with the academics. वहां जाने के बाद मतलब you have to pass around 9 time zones, क्योंकि if you look into the latitude and longitude of the globe, तो आपके टाइम जोन्स बटे हुए हैं. राइट, यू स्टार्ट फ्रॉम वन, आप मूव करते करते जाओगे तो आपको अलग अलग टाइम जोन्स मिलते हैं. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करते हुए यू रीच अंटार्कटिका. नाउ अंटार्कटिका के अंदर बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है. देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी, देयर इज नो रश, देयर इज नो बिल बोर्ड्स, देयर इज नो टीवी टावर्स. बिल्कुल शांत, अ प्रिस्टीन सरफेस ऑफ अर्थ. सिर्फ वहां पर जो है लोग जाते हैं only for the academics, or they go for the some of the scientific experiments and all. You can find the microorganisms, the algae, the मतलब आप वहां पर पेंगुइन्स इन सबको देख सकते हो, but you will not find the rush what you have in city. But पिछले कुछ सालों में, in the past 200-300 years, the earth has melted. ग्लेशियर्स आपके जो है वो टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. द टेम्परेचर ऑफ द ओशन हैज चेंज्ड. जो आपका एक सिस्टम होता है ऑफ वाटर करंट, वो आपका चेंज हो रहा है. ऑसिलेशन, देयर इज अ कंप्लीट चेंज इन द ऑसिलेशन. देयर इज कंप्लीट चेंज इन द सी लेवल. And this can definitely result in large consequences. अभी पिछले कितने सालों में हमने कितनी सुनामी, the number of earthquakes which have really resulted in havoc. अभी पीछे जो आपका रेन आया था, वैसा जो havoc, these are all the repercussions जो हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं. She says that when you go to Antarctica, वहां आपको एक algae, green grass दिखाई देता है, which is called as phytoplankton. And this is very important for the ecological balance of the marine animals and birds. लेकिन slowly and gradually हमारे ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन है, and उसकी वजह से this phytoplankton is also getting depleted. That means एक छोटा सा घास, बट उसका पूरा का पूरा जो साइकिल है उसको वो खराब करता है. And that is what she says, that take care of small things and the big things will fall into place. मतलब अगर हम छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखें
then that would not separate into large things. For example, टाइगर किंग के अंदर वो जो राजा था उसके छोटे से चोट थी. वैसे तो देखा जाए तो एक बांस चुभना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन जब उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, that resulted in his death. Anything which is minute and we ignore it may result in something disastrous. And उसी तरीके से हमारा अर्थ भी है. This chapter can be related with the poem Keeping Quiet. What the poet wants to say there. Pablo Neruda क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि ये जो हार्म है ना, this we are not doing to the mother earth. Fishermen in the cold sea would look at their hurt hands. The people will not be harming, the fisherman would not be harming the whales. ये सब वो क्या कहना चाहता है? War with gas, war with, what does he want? What he wanted to convey? The same thing. Pollution, deforestation, overusing of the resources, they all result in another disaster called global warming. And then she talks about कि वहां पर उसे चलते हुए कैसा लग रहा था when she was actually walking on the ice of Antarctica. वो कहती है इतना खूबसूरत था. The entire area was white. नीचे उसको ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहे थे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एल्गीज एंड स्मॉल मतलब की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. And while she was walking on the ice, it was as if they were walking on the ping pong balls. क्यों? क्योंकि वो जो जगह थी वो स्लिपरी थी. It was slippery. And she felt as if she was walking on the ping pong balls. So that is what the chapter says, journey to the end of the earth. The chapter deals with, आप इसको जो है correlate करके, while we are having the competency based questions, two chapters can be mixed and you may be asked a single question. अब इस chapter को हम keeping quiet से भी relate कर सकते हैं. इस चैप्टर को हम टाइगर किंग से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि टाइगर किंग के अंदर भी द सेम काइंड ऑफ थीम इज टेकन कि ह्यूमंस आर डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रीड. एंड जो आपका कीपिंग क्वाइट है वो तो डायरेक्टली इस चैप्टर से रिलेटेड है. एंड देन वी हैव वन चैप्टर इन अवर फ्लेमिंगो विच इज इंटरव्यू. उससे आपको रिलेट करके हो सकता है आपसे बोला जाए कि आप यू मेट तिशानी दोशी, तो आपको जो है अंटार्कटिका के बारे में यू हैव टू टेक एन इंटरव्यू. So you can expect such questions which can be clubbed with two chapters together. So let us start the chapter along with NCERT. The chapter is written by Tishani Doshi. If you want to know, this can be a question, as I have already mentioned. If you want to know about the past, present, and future of the planet, the Antarctica is a place to go to. Bon voyage means happy journey. Why? As I have already told, it is the oldest land mass, and there the Earth, still the trapping of the carbon is there. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Chokalsky, heading towards the coldest, driest,
windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras, that is in Chennai, and crossing 9 time zone, 6 tech board, 3 bodies of water, क्योंकि आपका जो है सबसे पहले आपका इंडियन ओशन आता है, फिर नीचे की तरफ आप जाते हो, and many ecospheres. By the time I actually set foot on Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. मतलब अपने घर से वो she must have traveled to the airport. Then from the airport, she must have traveled to the place from where she might have boarded her voyage to Antarctica. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. पहली बार जब उसने देखा after 100 hours of travel, एकदम सफेद चादर जैसा and ऊपर एकदम bluish, followed up with immediate and profound wonder. Profound मतलब deep wonder at its immensity, its isolation, but mainly how there could ever been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. क्योंकि इंडिया का तो हालत आप भी जानते हैं. Other parts of the world are polluted. Other parts of the world is unhygienic. Other parts of the world is completely full of cars and movements. And Antarctica is a pristine, ekdam silent continent. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist. And I've already told you, India, South Africa, South America, Australia, and Antarctica, ये पूरा एक ही था. Centered roughly around the present day Antarctica. They were quite different. Humans hadn't arrived on the globe scene. The climate was much warmer, hosting a variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived. इतने साल तो वो रहा, लेकिन जब डायनासोर्स चले गए, mammals आए, the land mass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. मतलब it is the time when the volcanic eruption was there, the landmass जो है that drifted, and some of it went and it was formed into what you call as India, some South Africa, kuch ko up, and there are small tiny islands which we have not yet discovered. To visit Antarctica now is to be a part of history. What is the meaning of this? मतलब आज आप अंटार्कटिका जाओगे ना, it is not only a continent, it is also a continent which is actually associated with the history of the world. It is actually the place where हमारा जो continent है, it should have belonged. To get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. It is to understand the significance of Cordilleran folds, Precambrian granite shield, ozone, carbon, evolution, extinction. मतलब ये वो सारी चीजें, पहले जो आपके फोल्ड्स थे वो टूटे, आपके ग्रेनाइट शील्ड्स थे, the formation of Himalayas, the formation of the present day continents, subcontinents, the formation of the ozone layer. अब ओजोन लेयर के अंदर जो आपका कार्बन है, जो कार्बन पार्टिकल्स which are trapped in the ice. When you think all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northward, jamming against Asia to buckle its crust and form Himalayas. South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage.
to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom. ये वही है जो मैंने आपको बताया कि एक पोर्शन आपका पहुंच गया एंड इट कोलाइडेड विद द प्रेजेंट एशिया, जहां पर आपका टेथस सी हुआ करता था, वहां आपके फोल्ड्स फॉर्म हुए और हिमालय बना। दूसरी तरफ आपका साउथ अमेरिका जो है, उसका वाला जो एरिया था, दैट ड्रिफ्टेड एंड पुश टू नॉर्थ अमेरिका, जहां बीच में आपका पैसेज बन गया, द प्रेजेंट डे ऑस्ट्रेलिया। ये सब एक टाइम दे ऑल वर एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ तो आपका ट्रॉपिकल है, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic, but for also imagination. मतलब एक तो ठंड में रहना, in southern parts you hardly have any cold area, ऊपर से सूरज का ना निकलना, not only as a physical but also as a holistic part, उसके लिए एक बड़ा ही अजीब सा था। It is like walking into a giant ping pong ball, devoid of a devoid मतलब without the trace of any human. No trees, billboards, buildings. You lose all earthly sense of perspective and time here. This came in the exam also, beta. You lose all earthly sense of perspective. Matlab, you would feel you are on some another planet. You will be feeling very strange. आप जो हो यहाँ पर आने के बाद you will have a weird feeling. The visual scale मतलब देखने के लिए, विजुअल स्केल मतलब व्हेन यू लुक, आपको क्या क्या दिखाई देता है? माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, मतलब छोटे से बड़ा, माइक्रोस्कोपिक टू माइटी मतलब स्मॉल टू बिग, midges and mites to blue, मतलब midges and mites, the small microorganisms, to blue whales, and icebergs as big as countries. छोटे छोटे आपके मैरीन एनिमल से लेकर बड़े बड़े वेल्स, आइसबर्ग इतने बड़े जितने की आपकी कंट्री होगा। वो एक मतलब बता रही है बेल्जियम जितना बड़ा, से हमारा हरियाणा। Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light, कि वहां पर 24 आवर्स आपकी गर्मी मतलब वो रहता है, फिर ठंड, सॉरी फिर विंटर, एंड देन अबीक्यूशियस साइलेंस। अबीक्यूशियस मतलब वेरी ओमिनस, बिल्कुल खामोश। अगर कोई आवाज आती है इंटरप्टेड, तो एवलेंच, जो आपके आइस शीट्स होते हैं उनके टूटने की, जब वो अपनी जगह से ड्रिफ्ट होते हैं, तो सिर्फ वही आवाज आपके जो है आते हैं। यू विल नॉट बी हैविंग द नॉइज ऑफ व्हाट वी कॉल एज ह्यूमंस, वो जो होता है ना, उसमें दिखाते हैं द मोटर्स या एनीथिंग मूविंग, उन सब की कोई आवाज नहीं है। नथिंग इज देयर। You will only occasionally find such voice only of the ice sheets. आपको सिर्फ आवाज आती है तो आइस शीट के सरकने की। And for humans, sorry, it is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history. And for humans, the prognosis is not good. This has been in the exam. ये आपका काफी important है, what we call as this phrase.
कि for the humans the prognosis is not good. Beta, what is prognosis? Now, in the medical term, we have two terms. एक होता है diagnosis, दूसरा होता है prognosis. तो prognosis आपका होता है any what we call as अनुमान. Some you are just making an opinion based on some facts. एंड डायग्नोसिस होता है जब आप एग्जैक्टली डायग्नाइज कर लेते हो कि क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ सोर थ्रोट, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर प्रोग्नोसिस. इफ यू हैव अ सोर थ्रोट, यू गो टू द डॉक्टर. इनिशियली उसको नहीं पता होगा कि क्या है, तो वो कहेगा हो सकता है वायरल हो या हो सकता है ये मतलब कि तो नाउ ये जो हो सकता है वो बोल रहा है ना, दैट्स प्रोग्नोसिस. एंड वंस आपका जो है रिपोर्ट्स आ जाते हैं एंड उसके बाद वो कहता है कि नो दिस इज ओनली वायरल, वो होता है डायग्नोसिस. तो यहाँ पर व्हाट ही वांट्स टू से इज शी वांट्स टू से इज द प्रोग्नोसिस, यानी कि इन सब चीजों को देखकर जो ओपिनियन है जो फॉर्म हो रहा है दैट इज नॉट गुड. यानी कि द फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस इज इन पेरिल. हमारा जो फ्यूचर है वो अभी खतरे में है. बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन व्हाट शी सेज इज दैट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस इज इन पेरिल. Human civilizations have been around for a paltry मतलब very less, बहुत कम, 12,000 years. मतलब हम इस धरती पर हमारा जो सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में हम जानते हैं वो करीबन 12,000 years ago है. Barely a few seconds on the geological clock. In short, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities. मतलब जब आपका जियोलॉजी जो है वो फॉर्म हुआ उसके तुरंत बाद ही ह्यूमन सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं आ गया. और इससे हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड हमने नेचर को पूरा खराब कर दिया है. क्वाइट अ रकस मतलब वी हैव क्रिएटेड अ chaos, वी हैव डिस्ट्रॉयड इट. हमने एचिंग आवर डोमिनेंस मतलब हमने पूरा नेचर को डोमिनेट किया है बाय बिल्डिंग द विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन has left us battling with other species for limited resources and unmitigated burning of fossil fuels. Unmitigated मतलब बचा नहीं रहे हम. We need to mitigate, we need to हमें बचाना चाहिए, लेकिन we are not saving, we are not conserving. हम जो है बिना सोचे समझे we are misusing the resources, we are exploiting the resources. और इसकी वजह से जो और स्पीशीज हैं like all the microorganisms, all the other organisms like tree, the flora, the fauna, इन सबको हमने खत्म कर दिया. And now we have created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. यानी कि जो हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है that has resulted in the destruction of the earth. Again, this has come in the exam, and this came when it came for 10 marks.
climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. अगर आप देखोगे तो everywhere you will find such debates. The world, the global, leaders are debating on this. In fact, there was one debate हमारे political science में है. This is there. This was in fact not a very बहुत वो नहीं था. Space पर, Antarctica पर, how we need to take the control so that we are not depleting the resources. लेकिन ये सारे environmental debates जो है, they end up only in argument, only in blame game. कौन सी कंट्री ओवर यूज कर रही है? जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनका मानना है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं दे हैव ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड, whereas जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका मानना है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं नाउ दे शुड स्टॉप यूजिंग. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the earth? There have been many, you can say speculations. कई speculations हुए हैं इस साल जो है end हो जाएगा अर्थ का. कभी कोई कहता है कि वहां पर अभी मतलब कि I had recently met one of the person for some function. So she was telling me कि there is one I don't know, पंच बद्री. एंड वो कहती है कि वहां पर जो है मतलब वो मिथोलॉजी है, बट शी सेज कि देयर वुड बी ऐसा ही एक कैटास्ट्रॉफ होगा और उसके बाद वो जो पूरा रास्ता है वो बंद हो जाएगा. एंड उसके बाद क्या होगा, दैट दो जो मतलब माउंटेन्स है वो एक हो जाएंगे. ऐसे कई मतलब कि देयर हैव बीन मेनी थ्योरीज. तो ये बोलता है कि स्लोली द अर्थ विल एंड. There have been many movies. I think the final ऐसा कुछ था. There is one movie that is also based on the same. बहुत सारे ऐसे हैं. But what? Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place which has never sustained a human population and remains relatively pristine in this respect. Pristine मतलब pure, without the disturbance of humans. Pristine का वैसे मीनिंग होता है प्योर, जहां मतलब कि जो इंसान है उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है. एंड ऑल्सो बिकॉज इट होल्ड्स in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layer of ice. And ये जो कार्बन ऊपर से नीचे गिरते रहते हैं, they are all trapped. और जितना हम इसको जो है रिसर्च करते हैं हमें पता लगता कितना पुराना है, और कितना पुराना है इससे पता लगता है अर्थ का इवोल्यूशन. That is why it is said, if we want to study and examine the Earth's past, present, and future, Antarctica is a place to go. Now comes ये कि what is the program about. ये जो प्रोग्राम है ये किसके बारे में है, and why the person has taken only the students, not the celebrities. Students on Ice, the program I was working with on the Shokalski, aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for planet. ये वो बच्चे हैं जो planet के बारे में पढ़ना चाहते हैं, those who want to know about their past, present, those who want to do something, ये उनके लिए है. And this, when this chapter was written, it was around 6 years, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. यहाँ पर ये जो बच्चा give back को उन्होंने inverted comma में लिखा है ना, this is
they can only in a limited way, मतलब जितना आप उनको पैसा दोगे उतना है. Whatever they do it for a purpose. They do it for a selfish purpose. They would not be associated with the cause. With students on ICE program, he offers a future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. जो आपके हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि आपके जैसे बच्चे, दे हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, and they also are the future generation, they are also the future citizens. So unse better to koi kuch kar hi nahi sakta. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the south pole not affected by it. It is easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see the glaciers and ice shelves collapsing, you begin to realize the threat of global warming is very real. अपने कंफर्ट जोन में बैठकर बात करना, अपने टीवी स्क्रीन पर बैठकर देखना, you can definitely do it, but it is easy to be base, मतलब unimpressed means sitting at your comfort zone, यहाँ से टीवी में देखना, oh my god, देखना बहुत आसान है, लेकिन जब आप वहां जाते हो, वहां आप ग्लेशियर्स को टूटते हुए देखते हो, देन आपको समझ आता है ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. छोटे छोटे जो चेंजेस हैं उनका कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है. दिस पेपर में ऐसा ही आता है, एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, या फिर आपके जो ये वाला है दिस वन, ये आपके आएगा तो भी आपको यही आंसर लिखना है. ईदर इट इज दिस वन और नीचे वाला आंसर सेम आएगा. And sometimes even in the question it may be directly mentioned, explained with the example of phytoplankton. Matlab, either this statement can come or this statement can come, or directly it might be written ki how it, matlab ki it is important, explain with phytoplankton. Phytoplanktons are the grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. क्योंकि वहां पर जो सिंगल सेल प्लांट्स है, दे यूज द, ये सिंगल सेल्ड है, दे यूज द सन एनर्जी टू assimilate carbon and synthesize organic compound in that wondrous and most important process called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, यानी कि they would not be able to absorb, और उसकी वजह से आपका जो मेरीन इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Again, यही आपका सेम है बच्चा. इस वाले if there is any question from this particular paragraph, आपको यही सब कुछ जो है explain करना है. Whether it may be the this statement or this statement,
Anything which comes, you have to give the example of phytoplankton. In the parable, मतलब शॉर्ट स्टोरी, मतलब पैराबल और फाइटोप्लैंक्टन की इस छोटी सी कहानी से हमें ये मेटाफॉर समझ आता है कि इफ वी वांट कि द बिग थिंग शुड बी टेकन टू केयर, तो पहले हमें छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. इवन द स्मॉलेस्ट, even the microorganisms present on this earth is as important as it is we. जैसे हमारे उसमें साइंस में आता है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो अर्थ वॉर्म होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. लेकिन अर्थ वॉर्म को हम एक वॉर्म की तरह देखते हैं, वी डोंट लुक इट एट एज अ मतलब कि फर्टिल एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. तो वही यहाँ पर भी जो है अप्लाई होता है. The last is her experience, ki how she felt when she walked on that ocean. My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic cycle at 65.55 degree. मतलब उनको जो है एक जगह पर रुकना पड़ गया था. तो कहती है कि एक जगह उनको जो है रुकना पड़ गया था. तो वहां पर the Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between Peninsula and Tadpole Island, which was preventing us going. मतलब वो बीच में फंस गया. So the captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we all were instructed to climb down the gangplank. Gangplank होता है एक साथ. In this आपके scalar chain में है, it is already there, this gangplank. In the scalar chain you have, मतलब in the same manner. And walk on the ocean, साथ में मिलकर. So there, मतलब उनको जो है उसको क्रॉस करके वहां जाना था. So there we were all 52 of us kitted out in Gore-Tex and glares. मतलब उन्होंने कपड़े जो पहन रखे थे, they were wearing the glare, मतलब वो जो आपके sunglasses, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath 180 meters of living breathing salts. मतलब उनके नीचे तो परत थी आइस की, और उसके नीचे जाकर था आपका सॉल्ट वाटर, यानी कि द सी, जो आपका समुद्र. इन द पेरिफेरी क्रेबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग. वहां पर नीचे जो है आसपास में आपके सील्स जो थे वो स्ट्रेच कर रहे थे, वो आइस फ्लोस पर. जैसे जो मतलब कि डॉग्स होते हैं, वो लोग गर्मियों में जो है कहीं पर नीचे छाया में, वैसे वो भी जो है दे वर आल्सो टेकिंग रेस्ट. It was nothing short of a revolution. Everything does indeed connect. मतलब she was very much amazed, astounded. ये कुछ बताने की बात नहीं है, सब कुछ जो है अपने आप कनेक्ट हो जाता है. When we see, तो हमारे दिमाग में वो सारी चीजें आ जाती हैं. 9 time zones, as I said. When you start वर्ल्ड का अगर आप लॉन्गिट्यूड देखते हो तो इंडिया एक जगह है. थोड़ा आपने देखा होगा when we say, भाई मेरा फ्रेंड अमेरिका रहता, अभी रात में वहां पर जो है अभी सुबह के 2 बज रहे होंगे. इन जापान और सिंगापुर हमसे वो 2-2.5 घंटे आगे चलते हैं. सो दिस इज हाउ द टाइम जोन गोज. एंड इवन इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया एंड मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फर्क है. So what she says is 9 time zones, 6 checkpoints. मतलब जहां जहां उनको कॉन्टिनेंट्स जिसके थ्रू उनको जाना था. The water, the bodies of water, many ecospheres.
I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. मैं एक जगह इतनी खूबसूरती. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it, and would we have to go the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhino? क्या हम लोग फिर मतलब कि ऐसा टाइम आएगा जब अंटार्कटिका विल बी वार्म? अभी तो वो बिल्कुल आइस शीट है. क्या हम लोग जिंदा रहेंगे या फिर हम भी डायनासोर्स और मेमोथ्स की तरह यहाँ से गायब हो गए होंगे? मतलब द ह्यूमंस वुड हैव मतलब कि एक्सटेंटेड, नॉट डेथ. मतलब हो सकता है कि एक टाइम के बाद ह्यूमंस ही यहाँ से खत्म हो जाए. हू टू से. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say, a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. मतलब हम लोग कई बार कहते हैं, अरे हिंदी में कहते हैं ना, आज करे सो काल करे सो परसों. तो नॉर्मली वी थिंक दैट these things have happened over millions of years. एक दिन से क्या होगा? So what she wants to comment is, even a single day, a single moment जो है, that is important. Every single day, every single moment is adding to the problems of the earth. And we need to tackle all these problems at the very earliest. क्योंकि कब एक मोमेंट में क्या हो जाएगा, nobody knows. There was one moment when everything drifted. There was one moment when many of the continents perished. There was one tsunami जब इंदिरा पॉइंट आपका जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर डूब गया था. तो वी नेवर नो कि एक पर्टिकुलर डे से कितना फर्क पड़ेगा, बट वी नीड टू. And that is what the chapter talks about, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi, which not only talks about the pristine Antarctica, it is also talking about the issues of global warming. It is also talking about why we need to preserve the earth, how we need to sustain ourselves, and how we are harming the earth as well as ourselves. So that's the chapter, Journey to the End of the